Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 13 and the name of our unit is Things Around Us. I am going to deliver lecture number 7 of this unit, and in this lecture we are going to discuss why do we need plants. So my dear students, हम different अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें प्लांट्स जो हमारे इर्द गिर्द एक लिविंग थिंग मौजूद है इनकी हमें क्यों जरूरत होती है. But before that, let's quickly recap the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer. For your help, the pictures are also there. Watch them carefully and then answer. Okay, what are features in which plants are different? Some have flowers, some do not have flowers. Some are small, some are tall. Some have a thick, hard stem, woody stem, and some have very small, thin stem. So these are differences in plants. Okay, my dear students, now is the time for activity. Now look at the pictures very carefully and then answer the given questions. So what do we get from plants? आप जरा मुझे सोच के बताएं that what do we get from plants? Fruits, vegetables. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कहीं आपको बड़ा सा दरख्त नजर आए तो हम उसके शेड में भी बैठ सकते हैं. And they also provide us clean air. ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं. So we get a lot of things from the plants. Okay, my dear students, in today's lecture, students will be able to recognize the importance of plants, trees as a source of food, shade and shelter. So plants जो है ये हमें food provide करते हैं, shelter provide करते हैं. बहुत सारे animals जो है ये उनका घर है. इसके अलावा ये हमें साया यानी कि शेड भी प्रोवाइड करते हैं. Now is the time for Islamic perspective. So he it is who spread the earth for you and made in it paths for you and sent down water from the sky, and then through it we brought forth many species of diverse plants. So my dear students, जितने भी पौधे ज़मीन पर लगाए हैं ये अल्लाह ताला ने लगाए हैं. आसमान से बारिश बरसाई और फिर बहुत सारे जो पौधे हैं वो ज़मीन पर लगाए और ये दे आर एक्सट्रीमली डाइवर्स यानी कि ये मुख्तलिफ तरह के हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था. So my dear students, now is the time for pre-reading questions. So listen to the questions very carefully and then answer them. So what fruit do you like? Favorite fruit आपका कौन सा है? I love watermelon. So tell me your favorite fruit. Very good. And do you like vegetables? बहुत सारे बच्चों को vegetables खाना पसंद नहीं होता, but vegetables are very healthy for you. I like potatoes. मुझे आलू बहुत पसंद है. Chips जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं. I like broccoli, I like carrots, peas, so ladyfinger. So these are a lot of vegetables that I like. Okay, my dear students, now is the time for reading. So my dear students, I request you all to please open page number 101. I hope everybody has opened the page. 111 it is, okay? So, do we need plants? Do we need plants? Plants are our friends. They give us many benefits. Benefits यानी कि फायदे. So plants जो हैं ये हमारे दोस्त हैं, friends हैं और ये हमें बहुत सारे benefits यानी कि फायदे देते हैं. So here you can see a lot of fruits here. Let's quickly read out their names. Apple, mango, banana, ऑरेंज, guava, अमरूद जिसे कहते हैं, पोमीग्रेनेट, अनार यानी कि, दिस इज एप्रिकॉट. एप्रिकॉट किसको कहते हैं? खुबानी. प्लम, आलू बुखारा. ग्रेप्स यानी कि अंगूर. सो दीज आर ऑल डिफरेंट फ्रूट्स. प्लांट्स गिव अस फूड. वी टेक डिलिशियस फ्रूट and vegetables from plants. मजेदार fruits यानी कि delicious fruits और vegetables हम plants से हासिल करते हैं. Fruit and vegetables keep us healthy. Fruit and vegetables keep us healthy. They save us from diseases. Diseases. Here are some of the vegetables we eat in every meal.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स हमें पौधों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं. हमने कुछ फ्रूट्स के नेम्स अभी पढ़े, आपने पिक्चर्स भी देखी उनकी. इसके अलावा हमें वेजिटेबल्स भी मिलती हैं और ये दोनों जो है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और ये हमें बीमारियों से भी बचाते हैं. अब आप डेली के अपने खाने में जो वेजिटेबल्स यूज करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम. सो दीज आर सम वेजिटेबल्स. लेट्स क्विकली रीड आउट देयर नेम्स विद द पिक्चर्स. पीज, पीज यानी कि मटर. पोटैटोज, potatoes, आलू. brinjal, brinjal. Radish, radish. Onion, onion. Bitter gourd, bitter gourd. ये करेला है. Turnip, turnip यानी कि शलजम. Carrot, carrot, गाजर. okra और लेडी फिंगर यानी कि भिंडी. spinach, spinach यानी कि पालक. रेडिश जो है ये एक छोटी मूली की किस्म होती है और ब्रिंजल जो है ये बैंगन होते हैं. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द वेजिटेबल्स जो आप अपने खाने में अक्सर इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कीप अस हेल्दी एंड सेव अस फ्रॉम डिजीजेस. अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, आप सीजन के फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं, सो दे कीप यू सेफ फ्रॉम द डिजीजेस. And vegetables also save us from diseases and they also keep us healthy. So different vegetables जो हैं वो आपको seasonal vegetables जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So listen to the questions very carefully and then answer. So from your listening and speaking assessment, question number 19, why do we need plants? We need them from food, shelter and shade. Number 20, name some fruits and vegetables. So the fruits are apple, banana, pomegranate, mango, and vegetables are ladyfinger, brinjal, potatoes, and radish, bitter gourd. These all are different vegetables. Then why should we eat fruit? Because they keep us healthy and save us from diseases. Very good. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Okay, so things around us. You will write down your name and your class here, and then read the name and write fruits and vegetables name in their respective column. Okay, my dear students, here are some fruits and vegetables given to you. Read out the name with the picture and then write down their name under the correct form. Okay, for example, banana. Banana is not a vegetable, it's a fruit. So you will write banana in the fruit column. Then next is brinjal. So brinjal is a vegetable, so you will write brinjal in vegetable column. So this is how you will complete the rest of the worksheets. Okay, pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. So quickly note down your homework. You will do home activity number 4. So according to this activity, which fruit and vegetables do you like the most? Ask from your parents, teacher about its health related benefits and listen them carefully and make flashcards of your favorite fruit and vegetables along with its benefits to present it in the class. Okay, my dear students, very easy thing. What you need to do is आपको अपना favorite fruit या vegetable select करना है. अपने पेरेंट्स से आपने बात करनी है, उसके बेनिफिट्स पूछने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लाइक पोटैटोज, तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी कि आई लाइक पोटैटोज, इट्स अ वेजिटेबल, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोटैटोज. सो इफ आई विल टेल यू पोटैटोज आर rich in carbohydrates and they are a very rich source of energy. तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पोटैटोज. ठीक है, वेरी रिच सोर्स. So this is how you can ask your parents about the benefits of the fruit or vegetable that you like. उसके बाद आप अपनी favorite fruit or vegetable की picture लगाएं और उसके साथ उसके benefits लिखें and present it in the class with the help of your teacher. Okay, my dear students, this was your homework. Now is the time for wrap up. So for wrap up, today we have learned that plants give us fruits and vegetables. Fruits and vegetables keep us healthy and save us from diseases. So my dear students, plants जो है ये हमें fruits, vegetables, shade and shelter provide करते हैं
और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, ये हमें डिजीजेस से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.